Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So, welcome back once again, and here we go again, continuing accounting for not-for-profit organization, but not an entire sum. The focus, like last lecture, is going to be short क्यूट लेक्चर. थोड़ा और एक्स्ट्रा हम लोग डिटेल्स करेंगे, बट द फोकस इज ऑन टू थिंग्स. वेल, इट इज ऑन वन थिंग्स बट फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. वन, how do we find out the subscription which is the income and which should be written in the income and expenditure account. Two ways that we have learned till now. Last lecture के पहले there was only one way. RTNL was the way, ऊपर का फॉर्मूला. ओके, एंड लास्ट टाइम मैंने लेजर इंट्रोड्यूस किया. ये लेजर एकदम सेम है, एक अक्षर इसमें मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आज का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ. दोबारा आपको याद दिला देता हूं कि ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये कौन सा टाइप का अकाउंट है? इनकम का अकाउंट है, कमाई. नाउ एन इनकम, इफ यू गेट इट ऑन टाइम, तो झगड़ा किस बात का है? बट अगर वो इनकम टाइम होने के बावजूद नहीं मिला, देन इट इज रिसीवेबल, इट इज एन एसेट. एंड देयरफॉर इफ यू नोटिस, यू सी बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसीवेबल फॉर लास्ट ईयर, एंड एट द एंड ऑन द ऑपोजिट साइड बैलेंस कैरीड डाउन, रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर. बट अगर ये एडवांस में आपको मिलता है, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु पे सब्सक्रिप्शन, बिकॉज दे आर पीपल लाइक यू एंड मी. थोड़ा भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, एंड पीपल डू नॉट परफॉर्म इक्विलिब्रियम में. इकोनॉमिक्स, ओके, इक्वल थोड़ा कम ज़्यादा तो होता ही है. जैसे 5 उंगलियां एक इंसान की सेम नहीं होती, वैसे 5 लोग का परफॉर्मेंस कभी सेम नहीं होता. हाँ, अगर कोई मुझे पैसा नहीं देता तो वो रिसीवेबल है, बट अगर कोई मुझे पैसा टाइम के पहले देता है तो वो रिसीव्ड इन एडवांस. दैट्स अ लाइबिलिटी. And if you notice above, balance brought down, it is advance received in the last year for the current year. And उसका बिल्कुल opposite is balance carried down, advance received in the current year but for the next year. So there are 4 balances, because subscription कभी कभी asset and कभी कभी liability. कुछ लोगों का subscription asset हो सकता है, कुछ लोगों का subscription liability. And in this particular question for today, we will obviously solve this formula subscription account, find out in both how much is the income of subscription,
but also show the connected presentation in the balance sheet. So अगर आप balance sheet बनाते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है ये दो बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, वी आर नॉट डूइंग अ फुल प्रॉब्लम, तो इसको हमको कोई टोटल नहीं करना. इनफैक्ट आई हैव चेंज द लाइन्स एंड मैंने नाम के वास्ते ओपनिंग में 3 लाइन बनाया है, बाकी का क्लोजिंग. टुडेज क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी हो गई हो, एज पर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ओके, for the year ended March 31, 2017, a very important, if the year ending is 2017, then it has to be 16-17. Current year must be 16-17, जो ये पीछे हमने लिखा है. नेक्स्ट ईयर है 17-18 एंड लास्ट ईयर था 15-16. द ईयर शुड बी क्रिस्टल क्लियर, साफ होना चाहिए. देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन योर दिस डिपार्टमेंट कि which year am I solving the accounts for? You are solving for the current year. Okay. और कुछ? Let's read. The subscription received was 2,50,000. Okay, so during the current year, 2.5 लाख 2,50,000 का सब्सक्रिप्शन हमको मिला है. कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट लाइन में लिख लेते. फर्स्ट लाइन में 2,50,000. अब इसमें गड़बड़ क्या है? अब इसमें एक नहीं अनेकों गड़बड़ है. लेट मी शो यू. कम डाउन. एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज. पॉइंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. होल्ड ऑन, आउटस्टैंडिंग मीन्स रिसीवेबल. क्यों? क्योंकि ये इनकम की बात हो रही है, वो कभी पेएबल नहीं होगा. कब? 1 अप्रैल 16. अच्छा, फर्स्ट डे को कितना? 50,000. तो ये लास्ट ईयर का है, क्योंकि ये फर्स्ट डे को आउटस्टैंडिंग है, ये लास्ट ईयर का है. Therefore, when I go to the formula of subscription in L for last year above, I write 50,000. Okay. Okay. Next, point number 2, subscription outstanding on 31/3 March 17, that is the end of the current year. करंट ईयर के आखिर में कितना? 35,000. तो ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर. करंट ईयर के लिए हमको पैसे नहीं मिले हैं. ओके, तो आपका जो रिसीवेबल का फॉर्मूला आता है फॉर द करंट ईयर, इन दैट फॉर्मूला यू हैव टू राइट 35,000. 35. All of that we are writing above in the formula will come later in this ledger behind me. Okay. और कुछ? Let's see. Third point, subscription received in advance. अभी कब एडवांस मिला? लास्ट ईयर में करंट ईयर का कि करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का? रीड केयरफुली. ऑन 1 अप्रैल 16. कितना? 25,000. देखो, 1 तारीख का होगा तो वो घटना लास्ट ईयर में हुई है. सो दिस इवेंट ऑफ एडवांस इज एक्चुअली ऑफ द लास्ट ईयर बट रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर. इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स वी कॉल इट दिस ईयर्स रिसीव्ड लास्ट ईयर. एंड द रीज़न आई कॉल इट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज मल्टीपल स्टूडेंट्स को ये पचने में, डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम जाता है. This year's received last year. How much is that? 25,000. Okay, this year's received last year. अभी एडवांस आया तो करंट ईयर में होगा नेक्स्ट ईयर के लिए. इनफैक्ट अगर आप वो ही क्वेश्चन में ध्यान दो, that's exactly what they say in point number 4. Subscription received in advance. It takes a little time for me to get the cursor on that point that I'm discussing. On 31/3/17 was 30,000. So current year में एडवांस मिला है आने वाले साल का, नेक्स्ट ईयर का. तो नेक्स्ट ईयर में आपको ये लिखना पड़ेगा. तो लेट्स राइट. एंड व्हेन आई डू दैट इन नेक्स्ट ईयर, यू लुक अबाउ एंड यू शुड नोटिस कि सब कुछ है रे, मतलब गाड़ी एकदम भर गई है. R
TNL, plus plus minus minus, and your answer, which is the subscription income for the current year, is 2,30,000. Now all that information ये पीछे के लेजर में आपको फिट करना है. ओके, फर्स्ट क्या है, आपको कितने पैसे मिले. देखो मिले तो हमको 2,50,000. ओके, ये जो है ना कैश रिसीव्ड, इस लाइन में आप लिखो 2,50,000. ओके, नेक्स्ट ये 2,50,000 में कौन से साल का क्या था. देखो सबसे पहले उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर का हमें अब तक नहीं मिला है, वो कितना है 50,000. आई रिपीट, so that was receivable for the last year. So if you look at the ledger, the debit balance is receivable for the last year. Okay, so here goes 50,000. and current year का receivable उसी next point number 2 में दिया था उन्होंने, was 35,000. I repeat 35,000. so if you look behind me, receivable for current year, ये मेरे ऊपर में लिख देता हूँ 35,000. okay, then came received in advance. लास्ट ईयर में एडवांस दिया था करंट ईयर के लिए, तो अगर आप वो जस्ट ऊपर देखो, रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द करंट ईयर, ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर. ओके, हाउ मच डज दैट कम टू 25,000. और अगला एडवांस था करंट ईयर में मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, वो ये क्लोजिंग है डेबिट में, एंड दैट कम्स टू, अगेन apologies for the circus with the cursor, 30,000. then we have written everything. We only have to find out how much will be written as income in the income and expenditure account. तो क्रेडिट का टोटल आ जाएगा आपको 3,10,000, डेबिट में टोटल आ जाएगा, माइनस द डेबिट you get 2,30,000, which is not different because above also we got that same answer. Now hold on, you write this definitely, but the question says, अगर मैंने वो actually नहीं पढ़ा तो पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए. Ascertain the amount of income from subscription for the year 16-17 did, and show how relevant items of subscription appear in opening and closing balance sheet. Okay, opening में आप क्या लिखोगे, the subscription receivable for the last year and received in advance. Actually closing में भी वही लिखोगे, subscription receivable and subscription received in advance. The date is different, wordings are same, but the date is very very different. Let me show it to you. So here goes, मेरे पीछे आया है. सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आना चाहिए, हाउ मच वॉज रिसीवेबल फॉर द लास्ट ईयर, रिसीवेबल फॉर द लास्ट ईयर, ये आपके फर्स्ट लाइन में दिया था उन्होंने, comes to around 50,000 receivable for last year, and then there was received in advance. okay, actually यही चीज ओपनिंग में था, एंड लाइन में ऑर्डर में जो दिया उन्होंने, दैट वाज रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा. थोड़ा आपको ऊपर जाना पड़ेगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा करंट ईयर का रिसीवेबल. अमाउंट इज डिफरेंट, जो भी अमाउंट था वो आप लिख लेना, 35,000. दिस वॉज द पॉइंट ऑफ रिसीवेबल. Then point 3 and 4 was received in advance. 3 में था लास्ट ईयर में एडवांस मिला करंट ईयर का, that will go in the opening balance sheet. Everybody, subscription received in advance, opening balance sheet, कितना 25,000. and ditto same, करंट ईयर में वही स्टोरी दोबारा रिपीट हुई, करंट ईयर में एडवांस मिला अगले साल के लिए. तो चलो थोड़ा ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ. द क्वेश्चन वॉज शो द रेलेवेंट प्रेजेंटेशन
in the balance sheet. So this is the relevant presentation in the balance sheet. It is these numbers on these days in these balance sheets that appear either in the asset or in the liability. टैली नहीं करना, नो दैट्स नॉट, दे आर जस्ट सेइंग ये जो चीज़ें सब्सक्रिप्शन के साथ कनेक्टेड है, वे डू यू राइट इट इनटू द बैलेंस शीट. अगेन today's question and the timing that this lecture took, it's not very long story because like I said प्लान था कि आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन पढ़ाना है and that's exactly what I have tried to do. So before I end for the day, very quickly, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए, लाइक ज़रूर कर लेना if you have understood the formula style and the ledger style explanation. We will continue with this chapter till the time we cover up almost everything which is there in the textbook. Please share these lecture videos with one and all, especially with your friends and classmates and your बैचमेट्स एंड योर ईयरमेट्स. ओके, जो भी इस साल में कोई भी डिवीजन में कोई भी स्कूल में अगर वो CBSE बोर्ड में ये चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं. ओके, सो डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अगर कोई परेशानी होगी, हाँ मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका डॉक्टर हूँ, मैं उसका इलाज कर पाऊँगा. सो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स फॉर एनी क्वेरीज दैट यू वांट टू रेज कंसर्निंग द टीचिंग दैट हैज़ जस्ट हैपेंड. डू इट connected to that lecture. It should not be से lecture 10 का भी मेरे को डाउट याद आया है तो वो लेक्चर के कमेंट में कर लेना, सो दैट वो बराबर से ऑर्गेनाइज्ड होता है, सो दैट one day I collect all of these doubts and I can solve one doubt solving lecture. क्योंकि आपका डाउट और दूसरों का डाउट सबका एक साथ में ही क्लियर हो जाएगा. ओके, till the time we meet again, please do take care of yourself, take care of your seniors and juniors and of your lovely family members. अपना ख्याल रखना. Good day to all of you. God bless. Bye for now.